Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical and derivatives update. Yesterday, if we see Nifty had opened on a positive side, it was running towards 17,700. But in the last hour, if we see, then expiry-related volatility led Nifty to break 17,600 when we breached 17,500 also, but we posted a close above it. So overall, if we see the Nifty now is in the range, because if we see then 17,400 and 18,000 is the broader range over here. And due to turn to be positive, if we break 17,400 on a weekly closing basis, then the overall the scenario could be negative and we could move towards 17,000 also. And we also filled the Monday's gap session that is at 17,710. That was there. And overall, if we see then 17,992 can also be a short resistance for zone for the next couple of days over here. And on the on the sectoral front, if we see banking and capital were goods were really very strong over there, and IT were seeing as the again witness over here. Bank Nifty also had a mixed review. It had opened higher and it had moved near 39,500, but it faced hurdles and obstacles over there. It came down to 39,000 and it also reached 39,000 for a brief period, but it again moved up and closed above 39,000. Overall, in banking, in Bank Nifty, if we see that until unless 38,000 is not breached, then our view is strong and we would Bank Nifty would remain strong and could move towards a resistance zone of 40,000. And on we should buy the sector on declines, and stocks such as Canara Bank, SBI, ICICI Bank, and IndusInd Bank can be used for long trades. And on the derivative front, if we see, then yesterday Nifty had made a short build-up to the tune of 0.45%. That is addition of 0.07 million shares, and total advanced declare was also negative. That is 68 stocks on gaining side and 128 stocks on the losing side. On the PCR front, if we see, then we saw a downtick to the tune of 0.92. And on the bank Nifty also, if we see, then we had seen major long liquidation to the tune of 2%, 2% overall. Rollovers in the Nifty, if we see, then rollovers comparatively in the Nifty is higher. From its average of 76%, it has rolled over 82%. And on the bank Nifty, if we see, the rollover is more and less flattish only from 84% and 85% overall. And if we see, huh, so that's it. And if we see in a report call friend, if we see, then we had given a buy in Lalpath Lab to be bought in the range of 2540 to 2560 with the stop loss of 2496 and a target of 2658. With that, over to Bundy sir for more updates. Thank you. Thank you, Itendra. Good morning, team. Few updates from my side. Yesterday, we have come out with new initiating coverage on a company called Barbecue Nation. Barbecue Nation is a breakout investment opportunity in India's fastest growing chain casual dining restaurant sector, or in short CDR sector, and it is growing at approximately this segment approximately 18% CAGR. Barbecue has been able to create right to win business model in terms of returns and payback comparable with top QSRs, with differentiated product positioning, fixed price and unlimited protein rich grilled starters. It is driven by superior store economics. Barbecue has been able to outperform competition in CDR sector. If you see rationals behind that, Barbecue enjoy differentiated presence in India's largest cuisine. In North India, they have a 27% market share and they are the fastest growing chain CDR under CDR sector. And we expect overall revenue to almost double in next 2 years. Also, the store level return on investment of barbecue restaurants is approximately at 44%, and their payback period is at 2.3 years, which is very much comparable with Domino's and KFC. Also, online food delivery contributes 13% to revenue and is likely to grow at 20% CAGR for next 2 years. Barbecue is also present in Italian cuisine under brand Tosca, which we expect 2x revenue in 2 years. We present barbecue as a high conviction buy idea with a target price of 1457. Next news is on the HDFC Bank. HDFC Bank has announced that they will acquire up to 10% in Go Digit life insurance for an amount ranging between 50 to 70 crores, which would be made in two tranches. Also, the acquisition is subject to execution of definitive agreements whose terms and conditions are to be mutually agreed upon. As per the information received from HDFC Bank,
Go Digit Life is yet to receive a certificate of registration from the IRDI. The company will engage in the life insurance business once it receives the same. We are very much bullish on the HDFC Bank with a target price of 1860. Uh, Although if you see the stock has been somewhat hovering around this range, the main main concern or main clarity from the management or from the RBI regulatory is the dispensation is on the dispensation part. As soon as that gives the clarity from the RBI part, the stock can give a much better or much higher returns. We remain bullish and we have a top pick as a HDFC Bank. Eicher Motors, on the Eicher Motors had informed that Mr. Arunachalam, the CFO and key managerial person of the company, has tendered his resignation and his last date would be 2nd September 2022. Also, the company has stated the appointment of new CFO in his place would be intimated in due course. The current CFO, Mr. Arunachalam, will join Crompton Greaves as a CFO from September 5. We have bullish or buy rating on the Eicher Motors. Next is on the Max Financial Services. The company has announced that the company's subsidiary, Max Life Insurance, announced that the receipt of the commencement of the business certificate for its wholly owned subsidiary, Max Life Pension Fund Management. This subsidiary will manage the pension assets with investment choice under the National Pension Scheme. So this bodes well in terms of revenue or profitability for the Max Financial Services. Next is on the Gland Pharma. The Gland Pharma has said that the company has received one observation on Form 483 from the US FDA that conducted pre-market inspection at Dangiga, Dangigal facility at Hyderabad. Though seems this seems to be slightly negative with one observation. So we should need to have a watch on this stock as such. Lastly, on the Lupin, Lupin has said they have entered into an exclusive licensing deal with Japanese drug maker Irom Group to conduct clinical trials, register, distribute, and market biosimilar Danusub in Japan. Danusub has a market size of approximately $500 million in Japan, and it is available under two brands, Pralia and Ranmark. So this seems to be positive for the Lupin as such. That's it from my side. Over to you, Shitija. Thank you, sir. Good morning, everyone. Further updates from my side. Indian Oil Corporation Limited aims to achieve net zero carbon emission target by 2046. So, company will invest rupees approx 2 trillion in phases towards the meeting this target. So even yesterday company annual general meeting updated that it's indicated that crude oil prices easing, the retail fuel prices may also ease going ahead. So next update on Titan. Tata Group of Titan is looking to have around 20 to 30 stores of its jewelry brand Tanishq in the Gulf and North America markets in the next 2 to 3 years. Its MD said yesterday that company is targeting widely spread Indian diaspora in the region, and it's going to open its first Tanishq store in the US in September, and also it plans to move stores in the North American market and in the West Asia region. So this is a positive for the Titan. Next update on Bharti Airtel. Bharti Airtel will aid in faster 5G rollouts. The telecom department amended right of way rules where cap has been fixed for deploying telecom infrastructure, while central government portal Gati Shakti Sanchar will provide approvals required by the department or state government. So this will help Airtel roll out its 5G services faster. So this update on Bharti. Next update on Dr. Reddy. The pharma company Dr. Reddy has received Establishment Inspection Report EIR for its Srikulam facility. So in the July, company informed about the inspection conducted by the US FDA at the formulation manufacturing facility in Srikakulam, Andhra Pradesh. So this update on Dr. Reddy. Next update on DLF.
The realty company DLF major is targeting around 1,300 crore sales revenue from its next luxury housing project at Panchkula in Haryana on better demand for the independent floors. So DLF has launched new 34-acre project Valley Gardens at Panchkula. So this is a one positive development on the company's front. Nelco, the satellite company Nelco Inc., a pact with Interlast to provide the in-flight connectivity services. So, as per the collaboration, Interlast airline partners and flyers will enjoy end-to-end broadband coverage on the domestic as well as international aircraft flying to Indian from an Indian airport as well as the aircraft flying over the country. Next update on iron ore prices. Yesterday, iron ore prices rose as the Chinese steel mills boosted production. So, according to the fast markets MV, benchmark 62% iron ore fines imported into northern China were changing hands for approx $103 a ton yesterday morning. So this update on iron ore prices. Last update on Hero Electric on yesterday decide to partner with GOBP to strengthen mobility solution for electric two-wheeler. So through this tie-up, Hero Electric customers are expected to get access to widespread charging and swapping network of GOBP, so which is also open to the other vehicle also. So currently GOBP is operating its EV charging and swapping station under the brand GOBP Pulse. So that's it from my end. Now I will hand over to Brijesh sir for further updates. Over to you, sir. Thank you. अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। मैं एक बार स्टार्ट करना चाहूँगा टेक्निकल व्यू के साथ। कल हमने रोल ओवर देखा था और मार्केट में थोड़ा सा ओवरऑल नेगेटिव कैंडल बना था। हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 दिन से मार्केट 17,400 17,800 ये रेंज में चल रहा है। तो बेसिकली हमने बताया था कि थोड़ा सा मंदी का माहौल बना है मार्केट में। रोल ओवर का अगर मैं डेटा का बात करूँ तो रोल ओवर निफ्टी में एवरेज रोल ओवर से ज्यादा रोल ओवर एवरेज पिछला 3 महीने का रोल ओवर 75% के एवरेज रोल ओवर है और कल हमने 82% के एवरेज रोल ओवर। तो हम ये बोल सकते हैं कि रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लॉन्ग रोल ओवर हुआ है। बट देन अगर आप फिर से बैंक निफ्टी की तरफ देखोगे तो बैंक निफ्टी एवरेज रोल ओवर के पास ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी का एवरेज रोल ओवर था 84% और कल हमने बैंक निफ्टी का रोल ओवर 83% देखा है। तो ये बैंक निफ्टी जो एक आउट परफॉर्म कर रहा था लास्ट इन दिनों कुछ दिनों से, वो एवरेज रोल ओवर पे बंद हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हम एफआईएस के डेटा जो वॉच करते हैं क्लोजली, उसमें हम इंडेक्स को वॉच करते हैं। इंडेक्स में एफआईएस ने शॉर्ट पोजीशंस बनाना चालू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट में थोड़ा अपसाइड का प्रेशर रहेगा और नीचे की तरफ हो सकता है कि एक बार हम 17,400 ब्रेक करने की कोशिश करें जो ये डेटा के हिसाब से। और मोस्टली अगर ये होता है तो हम लोग जो हमारा एक लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म में जो एक व्यू है कि एक बार 17,000 ब्रेक करके हो सकता है 16,800 16,500 के आसपास आके जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये ध्यान में आ रहा है मार्केट में। तो हम काफी थोड़ा कॉशियसली इसको ट्रेड करेंगे। 18,000 निफ्टी पे और 40,000 बैंक निफ्टी ये इमीडिएट हमको रेजिस्टेंस रखता है और थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन रहेगा। अब चलते हैं न्यूज के ऊपर। हमने बारबेक्यू नेशन के ऊपर हमने कवरेज इनिशिएट किया। हमें लगता है कि ये काफी अच्छा स्टॉक रहेगा। इसमें इसका जो कंपनी 18% CAGR के हिसाब से ग्रो कर रही है, इनका जो बिजनेस मॉड्यूल है काफी अच्छा है, इनका प्रेजेंस काफी अच्छा है। ये इंटरनेशनली भी इटालियन क्यूजिन में भी वो प्रेजेंस रखते हैं। जोग्राफिकली भी वो 6 नए स्टोर और इंटरनेशनली वो ओपन करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। उनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। ये एज कम्पेयर टू पिज्जा और डोमिनोज ये थोड़ा प्रीमियम है उनके। तो ओवरऑल हमारा हम ये बारबेक्यू नेशन में एग्रेसिवली थोड़ा बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हमारा टारगेट प्राइस 1457 का है। तो अगला अपडेट है HDFC बैंक के ऊपर। HDFC बैंक ने बताया कि उन्होंने वो 10% स्टेक लेंगे गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। इसका रेंज रहेगा 50 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में और ये 2 सेगमेंट में वो करेंगे।
सो ये ओवरऑल हमारा HDFC बैंक के काफी पॉजिटिव व्यू है। हम लोग इसमें 1860 का टारगेट प्राइस मेंटेन कर रहे हैं। अगला न्यूज है एशिया मोटर्स के ऊपर। एशिया मोटर्स के जो CFO है अरुणाचलम, ये रिजाइन करने वाले हैं और ये रिजाइन करेंगे 2 सितंबर को। और वो कंपनी उनके जगह पे नया CFO ढूंढ रही है, बट वो इंटीमेट करेंगे आने वाले दिनों में। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो CFO जो रिजाइन कर रहे हैं वो 5 सितंबर से क्रॉम्पटन ग्रूव्स को ज्वाइन करेंगे। अगला न्यूज है लुपिन के ऊपर। लुपिन ने जापानीज जो ड्रग मेकर जो है आयरन ग्रुप, उनके साथ एक डील साइन किया है, जिसमें वो ट्रायल्स करेंगे, रजिस्टर कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो एक प्रोडक्ट है बायोसिमिलर डेंसुबम, ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जिसका काफी बड़ा मार्केट साइज है जापान में, करीब करीब $500 मिलियन के करीब है। तो ऑलरेडी इसमें 2 ब्रांड्स अवेलेबल है जापान में, एक प्रालिया एंड डेनमार्क। और मुझे लगता है और इसमें न्यूज के हिसाब से लुपिन भी इसमें एंटर करेगा, तो लुपिन के लिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा काफी अच्छा पॉजिटिव न्यूज होगा। आगे चलते हैं हम IOC की तरफ। IOC में न्यूज है कि वो बाय 2046 तक वो 0 कार्बन एमिशन के ये टारगेट पे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज ये जो न्यूज है आगे लॉन्ग टर्म में मुझे हमें लगता है कि ये शायद पॉजिटिव न्यूज होगा IOC के ऊपर। टाइटन के ऊपर एक अपडेट है कि टाइटन ने ये बताया कि वो अगला 20 से 30 स्टोर्स जो उनके जो ज्वेलरी जो ब्रांड्स है तनिष, वो गल्फ और नॉर्थ अमेरिका में ओपन करेंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर। और 20 से 30 स्टोर्स खोलने के उनके अपडेट्स है। तो बेसिकली होगा क्या कि शॉर्ट टर्म में होगा कि इन्वेस्टमेंट्स होगा तो शायद प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो सकता है। सेल्स बढ़ेंगे, उनके ग्रोथ रेवेन्यूज बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में शायद हो सकता है। इमीडिएटली शायद थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। और इसके बाद एक रिजल्ट है डॉक्टर रेड्डी के ऊपर। डॉक्टर रेड्डी ने उनको एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है सिलिकॉन फैसिलिटी से। और ये जो रिपोर्ट बताता है कि ये US FDA की तरफ से फॉर्मुलेट हुआ है। तो ये एक फ्लैट न्यूट्रल अपडेट होगा डॉक्टर रेड्डी के ऊपर। अगला न्यूज है नेल्को के ऊपर। नेल्को एक सैटेलाइट कंपनी है जो इनसाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ये कनेक्टिविटी इंडियन एयरपोर्ट्स में ये स्टार्ट करने वाला है। तो होगा क्या है, तो एंड टू एंड जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है ये हमको मोस्टली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों में हमको काफी अच्छे से कनेक्टिविटी शायद मिलेंगे तो आगे चलते हुए। तो आई थिंक ये नेल्को के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव न्यूज होगा। अगला न्यूज है आयरन ओर के ऊपर। चाइनीज स्टील मिल्स का प्रोडक्शन थोड़ा बूस्ट हुआ है। एक जो एजेंसी है फास्ट मार्केट MD करके जो बेंचमार्क बताती है, वो 62% बता रहा है कि इंपोर्ट हुआ है नॉर्थ चाइना में। और जबकि 130 टन के आसपास वो उन्होंने फेरबदल किए हुए। तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव न्यूज होगा आयरन ओर की तरफ। अगला अपडेट है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ। हीरो इलेक्ट्रिक ने बताया है कि उन्होंने जियो BP से उन्होंने कोलैबोरेट किया है, क्योंकि वो 2 व्हीलर के जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उसमें वो उनका प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जिसका उनको काफी सारा चार्जिंग स्टेशंस और अगर बैटरी स्वैप करना है तो इसके लिए उनको बेनिफिट होगा। तो करेंटली जियो BP जो है वो अपने चार्जिंग स्टेशन जो ऑपरेट कर रहे हैं वो जियो BP प्लस ये ब्रांड के अंडर कर रहे हैं। तो वो ये भी बेसिकली हीरो इलेक्ट्रिक के लिए पॉजिटिव न्यूज होगा। तो ये थे आज के न्यूज। थैंक यू फ्रॉम आवर से। गुड डे।